वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हमने प्रीवियस वीडियो में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया हुआ था पॉपुलेशन इन इंडिया एंड उसमें हमने कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। आज हम लोग ट्रेंड्स इन पॉपुलेशन जो है डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली प्रीवियस वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले डिस्कस किया है इंट्रोडक्शन डिस्कस किया है, दैट इज़ इंडिया इज़ एन डेवलपिंग नेशन एंड it have economic growth and development, qualitative and quantitative both, and it can be measured on the term of population, national income and per capita income. Okay, so it is calculated on the basis of census survey population and it is conducted after the 10 year. Earlier China was the first rank in terms of population, but right now India is the first position for the population explosion. And population statistics is compiled and published by the Office 2 of the Registrar General and Census Commissioner of India. After that, we have seen trends in population growth from 1911 to 2011. We have seen lots of population average annual growth, then population in crores as well. Okay, we have seen in 1911 there is negative growth rate because of some epidemics or some you can say epidemics like cholera, influenza. In terms of these kind of diseases have affected the population growth rate. Okay, we have seen the marginal decline in population, then great divide here is known as 1921, and the positive growth is happened after the 1931. Then we have seen increase in the population onwards 1951, then population explosion from 1971 to 2001, then slow down in population growth rate from 2001 to 2011. Okay, then we have seen two theories of population growth. Number one is Malthusian theory, number two is demographic transition theory. Okay, okay, then today we will start from the stages of demographic transition. Okay, the first stage is low growth of population. So it is a pre-industrialized and primitive stage. Birth rate, death rate both are very high. So all the underdeveloped countries have passed through this stage. So social and economic conditions such as mass illiteracy, superstition, mass poverty, orthodoxy, lack of medical facilities, spread of epidemics, and these have low of population growth. These all are the reason for the low population growth in the India. So before 1921, India was the first stage of demographic transition. The next one is second stage, that is high growth of population. In this phase, introduction of industrialization and beginning of processing economic development is the indicator of the second stage. So due to the economic development, death rate started falling rapidly, but birth rate continued to remain high because of the population explosion. So all developing countries include India is the second demographic transition stage. So India is the verge entering into third stage, that is low and stable population. It is happened because of the spread of education, increase the medical facility, urbanization and industrialization. These all are the reason for the low and stable population. So rapid industrialization and urbanization result in the spread of education, consciousness about standard of living with economic development. Both birth rate and as well as death rate tends to decline. So all developed countries are in the stage. Okay, then here you have seen the figure from 1901 to 2011. You can see the graph, it is declining. Okay, so see 2011, it is a decline of population growth rate, or it is increase as well. Okay, birth rate also increase and death rate, it means low and stable population growth. Okay, after that you can see in the picture, that is population explosion in India. In 1961 there are
few family in the car, and you have seen 2011 there are number of people in the car, in the upside as well, inside as well, then back side as well, front side as well. Okay, so that is simply known as population explosion. Okay, so let's discuss what are the causes of high birth rate. Cause क्या है high birth rate का? Okay, so population explosion is a situation where the growth of population is faster than the growth and development of an economy. So let's see and let's discuss the high birth rate reason behind it. Number one is illiteracy. तो स्टूडेंट्स अगर पढ़े लिखे लोग बहुत ज़्यादा कम रहते हैं तो उन्हें अवेयरनेस नहीं होती है, उन्हें पता नहीं होता है कि ज़्यादा बच्चे होने की वजह से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, या उन्हें प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिल सकता है, या बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने मिलती हैं. सो द परसेंटेज ऑफ illiterate in the country is reasonable very high. So the attitude of illiterate people towards marriage and child are remain rigid, like शादी होने के बाद बच्चे इज कंपल्सरी, लाइक ऑल दिस थिंग्स. सो ऑल लेवल ऑफ लिटरेसी अमॉन्ग फीमेल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई बर्थ रेट. नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज. इट मीन्स, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि शादी होना ज़रूरी है. दिस इज नोन एज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज. तो बेसिकली in India, marriage is considered as both religious and social obligation. So even with the spread of education, attitude of people towards marriage is remain unchanged at large. यानी कि एजुकेशन बढ़ने की वजह से भी, यानी कि सोशल चीज़ों के भी बढ़ने से, लेकिन लोगों का अभी तक भी वही सेम थिंकिंग है कि शादी करना बहुत ज़रूरी है, बिना शादी के तो लाइफ जो है सर्वाइव होने वाली नहीं है. थर्ड रीज़न इज़ एज ऑफ मैरिज. देखो स्टूडेंट्स, पहले क्या था, पहले जो है गवर्नमेंट ने लड़कियों की जो एज है, शादी की एज थी वो 18 साल कर दी थी और लड़कों की 21 कर दी थी. बट आपके लिए, आपकी खुशी के लिए बता दूँ तो आज के टाइम में लड़कियों की भी जो शादी की उम्र है गवर्नमेंट ने 21 ही कर दी है. सो इन इंडिया लीगल एज ऑफ मैरिज इज़ रिलेटिवली लोअर कंपेयर टू द अदर कंट्री. इट इज़ 18 ईयर फॉर फीमेल एंड 21 ईयर फॉर मेल. सो लो एज ऑफ मैरिज इज ऑल्सो रिजल्ट इन द हाई बर्थ रेट. पहले क्या था कि जो एक ट्रेंड था, छोटे बच्चों की शादी कर दी जाती थी जिसको अर्ली मैरिज कहा जाता है. तो दैट मैरिज इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई बर्थ रेट. देन प्रेफरेंस ऑफ फॉर मेल चाइल्ड. एक लड़की की चाहत में क्या होता है, बेटियों की लाइन लग जाती है, फिर भी बेटा नहीं आता है. लेकिन तो इससे क्या होता है, इससे पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज होती है. सो दिस इज सिंपली नोन एज preference for male child. So many Indian parents are opting to continue having children until they have a son or considered number of sons. This is simply known as son meta preference. Next one is joint family system. So there is no individual financial responsibility in a joint family. Hence, existing of joint family is also responsible for the high birth rate in India. ओके. नेक्स्ट वन इज डिपेंडेंसी ऑन एग्रीकल्चर. आज के टाइम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है. तो एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है यानी कि उनको लगता है कि मैन पावर की बहुत ज़रूरत है. इस चक्कर में मतलब उनका एक रहता है कि ज़्यादा बच्चे होंगे तो ज़्यादा फील्ड पे काम करेंगे और हमें ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा. इस रीज़न की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिलती हैं. So Indian agriculture is driven by manpower. In India, there is a over independence on agriculture. More number of children in the family implies more labor force available for field work. Next one is widespread poverty. So poverty बढ़ना भी it's also one of the reason for high birth rate. So widespread poverty means poor people prefer large families because they feel that more children means greater economic support. Okay. The next, lack of awareness among the family. तो फैमिली में अवेयरनेस ना होना इट ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न फॉर high birth rate. So most of the family are ignorant about the availability of various means and techniques of family planning. So that is why it spread the high birth rate in the family. ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा. तो हमने इसके 8 पॉइंट डिस्कस किए हैं. नंबर 1 इज इलिटरेसी, नंबर 2 इज यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ मैरिज, द नेक्स्ट वन इज एज ऑफ मैरिज, देन प्रेफरेंस ऑफ मेल चाइल्ड,
then joint family system, then dependency on agriculture, then widespread poverty, then lack of awareness about the family welfare service. आई होप आपको उस लेक्चर समझ में आया होगा. तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए थैंक यू सो मच एवरीवन एंड टेक केयर.